Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Right. I think everything seems to be fine. Yes or no? I think everything is good. Oh, I'm audible and properly visible. Right. Without any particular tension. Okay. So, सब बढ़िया है. So, basically, when you are going through this particular week, है ना, थोड़ी सी कुछ चीजें रही हैं जो प्रॉब्लम में रही. फॉर एग्जांपल आई हैड बैक इशू, तो मैं द हिंदू नहीं ले पा रहा था. एंड उसके अलावा आई गॉट लाइक फिजियो एंड अदर थिंग. नाउ आई एम फाइन, सो आई एम बैक. राइट. सो लास्ट वन वीक की बात करें तो अभी रिसेंट अपडेट जो है दैट इज अबाउट इस्लामाबाद टॉक. अभी लाइक जस्ट 5 आवर्स 6 आवर्स बैक मैंने ट्विटर चेक किया था. तो ट्विटर में आई गॉट टू नो कि जो ईरान है उसने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि हम बातें तब करेंगे, है ना, जब क्या कहते हैं ब्लॉकेड हटेगा. तो इस्लामाबाद टॉक डजंट लुक लाइक इट्स गेटिंग इनटू द शेप, है ना. यस, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो टाइम पे आ रहा है. देन अदर थिंग वाज दिस पर्टिकुलर delimitation bill. A lot of politics is being going on, and I'm going to talk about it in very detail today. Hi Shaista, right? Shaista. Oh, hello Divyanka. Yes, it started or like okay. ठीक है. So, delimitation वाला बिल तो जो था, that was like associated with the female reservation bill. उस पे काफी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं. We are going to talk about it, right? We also saw some Bengal election thing. वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही हैं. एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग. मतलब ट्रम्प वर्सेस ईरान, जो ट्विटर मीम वॉर है, दैट इज कंटिन्यूअस. राइट. और उस पे अभी भी वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर व्हाट वी कैन से इन एंड आउट की उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा. पहले जेडी वैंस जाने वाले थे, फिर नहीं जाने वाले थे, फिर अगेन जाने वाले हैं. अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता. फिर द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज एड्रेस टू नेशन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. राइट. See, I don't want to be political, but whenever he is at 8:30 or 8 o'clock sharp कि भैया मैं एड्रेस करने वाला हूँ, मैं बीपी की गोलियां गोलियां रख लेता हूँ कि इस बार मोदी जी क्या बंद करने वाले हैं. बट थैंक गॉड इस बार उन्होंने कुछ बंद नहीं किया. He actually talked about women reservation bill and delimitation. He had some 29 minutes speech or 29 minutes of addressing, जिसमें उन्होंने 59 times or 58 times कांग्रेस का नाम लिया. So it's more over looking like look like a political rally. But I was expecting he is going to talk about some issues in Manipur or the Iran-America war, the fuel price that is going to be critical in next few months, and fuel supplies and other thing. But वो कुछ नहीं निकला. So it was a kind of like not very important topic to discuss. तो हम उसको discuss नहीं करेंगे. Let's discuss the most important thing of this particular week, that is constitutional amendment bill. Yes, 131 amendment, constitution amendment bill. So, क्या है कहानी इसकी, क्या नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं. The Union government has proposed Constitution 131st Amendment Bill and the Delimitation Bill to enable redistribution of Lok Sabha seats based on the 2011 census. So, those are 11 census के basis पे. Let's discuss this. 2011 census के basis पे, right, there is going to be delimitation. So 1970 अगर मैं बात करूं तो 1976 से 2001, राइट, फिर 2001 से 2026. सो फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स, राइट. सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी जब ये पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन को हॉल्ट किया गया. देन इन 2001 अटल जी की सरकार थी जब इनको हॉल्ट किया गया. द रीजन वाज क्वाइट सिंपल, राइट. द रीजन वाज अ पॉपुलेशन. Yes, there was a population, what we can say, target that we can say. तो दोनों सरकारों ने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन टारगेट को कंसिडर करते हुए ये पर्टिकुलर चीज रोकी थी. व्हाट इज समथिंग जो कि समझने लायक बात वो ये है कि बाय द टाइम ऑफ 2030
देयर शुड बी अ फिक्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए थी, जिसमें नॉर्थ साउथ दोनों जो है डिवाइड कम वो हो जाते हैं। बट विदाउट एनी कंसिडरेशन ये पर्टिकुलर बिल जो है वो आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बोला कि हम 2011 के सेंसस पे बढ़ेंगे, जबकि 2011 का सेंसस जो है वो पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मेन टारगेट है उसको अचीव करता ही नहीं है। राइट, सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर बिल वाज। उन्होंने बोला कि 2011 के बेसिस पे करेंगे, साथ में हम विमेन रिजर्वेशन बिल भी ला रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा करेंगे। So total we are having approximate 550 seats of the Lok Sabha, where 530 comes from the state and 20 from the union territory. As per the constitution, at present effective strength is 543, जहाँ पे 530 members are from state and 13 members are from union territories. So 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, एंड 13 मेंबर जो है वो यूपी से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Right, this distribution took place based on the 1971 census. So 1971 में जो सेंसस हुआ था उसकी बेसिस पे आज की लोकसभा डिजाइन है। राइट, अब बात करें आगे की, तो उसके बाद 2001 के सेंसस में होना था, बट उन्होंने स्टॉप कर दिया था। They freeze the number of seats at Lok Sabha that is valid until the 2026. ये बात ध्यान रखने वाली बात है। So presently we are having some 550 seats, जिसमें से 530 is supposed to come from state, 20 from the union territory. Presently that is 543. Right, 530 members from the state and 13 members from the union territories. ठीक है? Let's come into the next one. Right, what is the proposed bill? The bill proposed to remove the constitution that frozen the state allocation. So जो number of seats हैं उनका जो particular जो freeze हुई है, the constitution जो है उसको सबसे पहले क्या करेगा, इसको हटा देगा। 50 you can see, क्योंकि like ये आ सकता है। The second thing is the reallocation of the seat will be done on the basis of 2011 census. Sorry, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मैंने ये स्पेस करते टाइम या प्रिंट आउट पेश करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं, बट आई टेल यू व्हाइल टेलिंग, लाइक व्हाइल डिस्कसिंग। The maximum strength is a 550, which is to be increased by 850, है ना? वो 850 हो जाएगा, where 850 will be coming from the states and 35 will be coming from the UTs. So the proposed bill है वो सीधे तौर पे 50% of share of seats जो है वो increase करता है। So 550 से वो 850 हो जाएगा, out of which 815 are supposed to come from the states and 35 member of parliament is supposed to come to the union from the union. Right? ये उनका proposed remarcation था। उसके बाद ये कहते हैं, ये मतलब जो बिल का अगला पार्ट होता वो ये होता कि जो 33% विमेन रिजर्वेशन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंडर पास हो चुका है, हम उसको क्या कर देंगे, इस पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर देंगे। अंडरस्टैंड दिस, राइट? वी हैव 550 लोकसभा and we don't have 33% women reservation here. I'll call it WR. They told us that they are going to increase A by 50 and they're going to give 33% reservation out of that. Right? The problem started with this. Okay. The politics started with this. You are supposed to increase it before giving the reservation. So the number of members who are male, they should have their seat properly, right? आप उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। So पहली चीज तो ये है कि कुछ फेमिनिस्ट लोग जो थे, उन्होंने वो फेमिनिस्ट जो थे, they started creating some problem that why you are not providing the 33% reservation for the existing number of seats, right? Why you have to increase it so that the number of male member do not decrease? That sounds funny, but that's true. ये चीज हुई है। राइट, नाउ दीज वर द मेजर फीचर्स कि इसके बाद जो जो चीजें होने वाली थी। सबसे पहले बात कर देते हैं फेवर्स, है ना? यस, फेवर क्या थे, कि व्हाट वर द फेवरेबल आर्गुमेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट देयर वर टू मेजर पर्टिकुलर पर्सन टू लिसन व्हेन इट कम्स टू फेवर। वन ऑफ देम इज अमित शाह, राइट, एंड अनदर वन वाज मोदी जी। आपने अगर डिबेट थोड़ी बहुत भी सुनी होगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि अमित शाह हैड अ वेरी गुड प्लानिंग। दो मैंने अमित शाह का पूरा स्पीच देखा, एंड अमित शाह के स्पीच में लाइक 70-80% डिस्कशन वाज पॉलिटिकल, सम 20-30% डिस्कशन वर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि आपके बिल से रिलेटेड था।
देयर आर सम पर्टिकुलर थिंग दैट वाज क्वेश्चनेबल, वो हम अगेंस्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले जो क्रक्स निकल के आया उसकी बात करें, तो अमित मेंशनड, द आर होम मिनिस्टर मेंशनड दैट इट विल इंश्योर द डेमोक्रेटिक इक्वालिटी. He clearly mentioned the purpose of delimitation is not about the political parties. It's about the representation of the people, which current scenario में population wise set नहीं है. Simply, if right 100 population है and there is one representative जो member of parliament है, एक MP जा रहा है वहां पे, if population increases to 300, right, and we still have a one MP, that means that single MP is going to have a huge burden for the population and their development. तो उनका ये मानना था कि नंबर, like population has been increased significantly, so why not we should increase the number of representative that were coming from the same particular reason. All right, he clearly mentioned that its particular purpose is not for the political parties, it's for the political representation with the करंट पॉपुलेशन रियलिटीज. उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीट्स की भी नाम बताए कि देर इज अ सीट जहां पे 4 लाख की पॉपुलेशन में एक है, देन देर इज अ सीट जहां 31 लाख की पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट. एंड द थिंग इज कि क्या कहना चाहिए, द ही एक्चुअली मेंशन सर्टेन वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर एक एमपी इज रिप्रेजेंटिंग 4 लाख पीपल, अनदर एमपी इज रिप्रेजेंटिंग 31 लाख पीपल, डेफिनेटली द पर्सन दैट इज कमिंग फ्रॉम 31 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज मोर बर्डन. तो उनका ये कहना है कि जो पॉपुलेशन रियलिटीज है करंट में उसके अनुसार उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. विच जजमेंट वी रीड फॉर कैन बी रीड फॉर एमएससीटी एग्जाम. रेगुलर वन कोई ऐसा वो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है शाइस्ता, right, correcting the historical distortion. Yes, he clearly mentioned about 1971 population figure and a frozen law. Right, he forget to mention about 2000. वो थोड़ा सा पॉलिटिकल रीजन भी है क्योंकि 2001 में अटल जी की सरकार थी, बाद में ऑपोजिशन एमपी है प्रियंका गांधी, उन्होंने क्या किया, याद दिलाया कि आप 2001 का फ्रोज भूल गए. राइट, तो उन्होंने बताया कि 1971 से वी आर एट द लाइक अप्रोक्सीमेट 50 इयर्स जो है वो पास हो चुके हैं. 50 इयर्स से वी डू नॉट हैड अ डीलिमिटेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है तब से फ्रीज्ड है एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो वी शुड हैव डीलिमिटेशन, we should have number of seats that is being increased, right. And he also mentioned about demographic shifts, राइट. उन्होंने बोला कि देयर इज अ प्रॉपर व्हाट वी कैन से redistribution that is supposed to be acknowledged, right, because there are people who are living from one state to another state, their voting rights, their voting constituency, their voter list, there is a lot of thing that is to be changed. तो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है उसको भी डिलिमिटेशन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. द लास्ट वन इज enabling the women political representation. He also said कि भैया after this delimitation we are going to put 33% reservation for women in the Lok Sabha and state legislative assembly, which will increase the gender equality and representation of women in the political system. So उन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें रखी, and after that there were opposition MPs who put their point of view, right. Okay, सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैलेंस, है ना. आई एम नॉट श्योर, लेट अरुण जेटली, राइट, इनको यहाँ पे थोड़ा सा याद करना जरूरी है, बिकॉज ही वॉज द लॉ मिनिस्टर when Atalji government was government has froze the delimitation for another 25 years. So he was the law minister in 2001. He was a young, dynamic lawyer, legal expert, and he mentioned certain point which opposition failed to mention. Yes, he said the delimitation is to be done because of a population increase, right. Yes, उनका ये कहना था कि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हमें डिलिमिटेशन करना है. सेकेंड थिंग ही मेंशन दैट पॉपुलेशन imbalance. Right? Yes, he said the population of North has increased significantly. The increasing rate of the population is close to 20-25%, while South is having very less population increase. For now, अगर मैं current scenario की बात करूँ तो यूपी, Uttar Pradesh, which is the largest, most populous state, has a 21% growth rate in the population as per the last census, while Kerala has just 4%.
So North and South state are having different population increase rate, and that is what is alarming. Arun Jaitley ने simply mention किया था कि first of all population is supposed to be stable and the achievement for the population stable population जो हमारा population target है population achievement stability target है that is going to match approximate 2030 right 2030 35 तक हम एक stable population achieve कर पाएंगे for now India is the largest population right India is the country with the largest population we beat China in like 2023 itself so we have the largest population. The distribution of the population in north and south are very different. तो सबसे पहले opposition ने जो mention किया वो था ये कि भैया this is a threat to the federal balance. Yes, they mentioned that reforms may disproportionately favor the state with the higher population growth particularly in the northern state, thereby reducing the relative political weightage of the southern state. They are true, they are correct on this. Let's compare it with this. Let's say some state is having just 20 seats और उसकी अगर मैं population के basis पे, for example, केरला की बात करूँ, केरला विल हैव हार्डली 4% इंक्रीज तो केरला का जो इंक्रीज होगा वो कम होगा यूपी का जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा अगर मैं प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन इंक्रीज की बात करूं तो नाउ टॉकिंग अबाउट इन अदर सेंस right there was a proposal of 50% increase with the every state so understand somebody is having a salary of 10,000 right? And somebody is having a salary of 1 lakh. So if we will increase 50% of 10,000, that will be 15,000. But if I'll increase 50% of 1 lakh, that will be 1.5 lakh. So significantly, an exponential proportion will increase in terms of number of seats when it comes to the northern state. तो 50% मार्क भी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा था the politics is the like discussion of this particular point कि हम 50% proportionate increase देंगे हर एक state को that was going on even before the bill was put on the table but it was not mentioned on that bill and when Amit Shah was asked Amit Shah ने बोला कि if you want 1 घंटे के अंदर हम बिल का नया पर्टिकुलर अमेंडमेंट ला देते हैं जिसमें 50% का मेंशन होगा और जेरोक्स में 1 घंटे का टाइम लेंगे while the new parliament doesn't need xerox they have a proper screen and वहां पे पीडीएफ चलती है even our budget is digital nowadays so वहां पे लोगों ने बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स थी कि when you were ready for that 50% increase right 50% proportional increase why you did not put it in the what we can say bill itself second if the northern state will have more number of seats right and southern state will have less representation that clearly means ki whoever winning election in the north can hold the central government for longer period of time while the southern importance of southern state will go less and less in every election so ये कहीं ना कहीं फेडरल बैलेंस को क्या करेगा डैमेज करेगा दैट इज करेक्ट राइट पॉलिटिक्स ही कहती है कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का जो पर्टिकुलर वो है क्या कहना चाहिए परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट वेरी गुड southern states are either ruled by congress or the regional parties or the communists right bjp is not doing very well so they wanted कि northern indian state like अगर मैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूपी बिहार इन सब की बात करूं तो they have large population they will have large representation and BJP might be in power for the very longer period of time. That is the politics. And that is why they are calling it a threat to the federal balance. Second, the weakening of a bicameral balance. Yes, expansion of Lok Sabha around 150 member without the increase of Raj Sabha may tilt the institutional balance in favor of the lower house. That was also my question कि भाई जब तुम when you are increasing the seats in the Lok Sabha itself, why you are not increasing the seats in the Rajya Sabha? बेचारे राज्यसभा ने क्या बिगाड़ा? Right? So the opposition also mentioned this point कि the importance of the upper house, right? That will decrease. Upper house में numbers बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए इक्वल बैलेंस में और वो नंबर गेम पे खेला जा सकता है while lower state है lower house has more numbers when it comes to BJP. तो वो weakening the bicameral system की जो दो particular सदन होंगे, द्विसदनीय जो प्रक्रिया होती है, bicameral system होता है, उसको भी वो करेगा, क्या कहना चाहिए, imbalance करेगा. The last one is reduced legislative effectiveness. Yes, a much larger Lok Sabha may dilute the individual participation of the member of parliament. It may adversely affect the quality of debate, deliberation, and overall legislative functioning. मैं इस पे एग्री करूंगा
राइट। आई जनरली डोंट एग्री विद द ऑपोजिशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉजिकल बात नहीं करते, बट हाँ, मैं इस चीज पे एग्री करूंगा। द लोकसभा, द हाउसेस, अगर मैं बात करूं, द इफेक्टिवनेस ऑफ डिबेट ऑफ द हाउसेस हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। मैं जब रिटली के स्टेटमेंट को पढ़ रहा था, इन 2001 वाले स्टेटमेंट को, I saw that statement, I heard the statement, and after that, I read the arguments of others. I realized there was a quality debate that was going on at that time. Nowadays, quality debates जो है वो missing है, right? There are some reasons the government doesn't participate, the opposition doesn't participate. They walk out, government let them walk out, and that is how the things happen. If the number of members are increased, ये जो chaotic situation है वो और ज्यादा बढ़ सकती है. So the first thing we should do, we should fix the quality debates, है ना, कि हम उसको कैसे करेंगे, what are going to be the duties as a member of parliament and other thing. But वो जब तक नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एंड दे आर करेक्टली अगेंस्ट इट. नाउ माय आइडिया इज क्वाइट सिंपल, right, which is supposed to be discussed. One is southern state have implemented the population policies very well. They put the education in the what we can say, in the priority. They put the population control in the priority, right? They had all those particular people understand about the population growth, the consequences, and other thing, and they did a great job. They had industries, they had working population. On the other half, the northern states, right, they actually failed to control the population, and population policy को properly implement नहीं कर पाए. ये एकदम सच बात है. I belong to north. Yeah, right. I visited South several times. I understand that Southern people how they understand the real problem, and they really worked on it. Northern India में they don't care, like much of the people don't even care about the population growth or something like this. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्दर्न स्टेट है उनको इस पर्टिकुलर चीज का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, वाइल सदर्न स्टेट जिन्होंने ये पर्टिकुलर पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट की है, दे शुड नॉट गेट एनी पनिशमेंट फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी. सो वी अंडरस्टैंड कि दिस बिल इज टेकन डाउन बाय द ऑपोजिशन, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए थी, विच दे फेल टू अचीव. देखो, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल तो नहीं हूँ, बट बड़ा मजा आया था ओम बिरला ने जब अनाउंस किया था कि बिल हैज टेकन डाउन, राइट, बिकॉज इन जनरल ओम बिरला जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड रहते हैं. तो ये चीज हुई थी, मुझे थोड़ा सा वो लगा. सेकंड थिंग, a very good functioning united opposition is something which is always welcome. After 2024 election, that opposition bloc, जिसे हम इंडिया ब्लॉक कहते थे, it was almost what we can say Mr. India kind of thing कि गायब. But in this particular situation, they came together and they opposed it with the logical discussion. कुछ लोगों का आपको वो चीज सुनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उनका स्पीच बहुत बढ़िया था. प्रियंका गांधी का बहुत बढ़िया था. मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी. वन ऑफ द वर्स्ट स्पीच आई एवर हर्ड इन द पार्लियामेंट वाज फ्रॉम कंगना रनौत. I don't know why she's in politics, but ठीक है. So that was the against favor. Now let's get into some particular thing. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो आपको डिस्कशन में लाना चाहिए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम. Now it's an act actually. Yes, in 2023, yeah, right. If I'm not wrong, September 2023, I remember the date 17th of September. There was a special session that was called by the government, right, in which all of the member of parliament, only two, right, except for only two, all of the member of parliament favored this particular bill. Only two were the ones जिन्होंने अपोज किया था, बाकी सब के सब, राइट, इस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट करके इट वाज पास फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इटसेल्फ. इट वाज नोटिफाइड बिफोर दिस 2026 स्पेशल सेशन. Right, Waymaker, the most civic people of this country are gonna be underrepresented, If not today, then someday else, but surely, because we can challenge the Delimitation Commission, which will be influenced by BJP. All right, politics is different.
पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, मतलब पॉलिटिक्स में इट्स नॉट जस्ट बीजेपी. इफ देयर वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, they always used the established institution in their favor, right? Some do it less, some do it more, some accept it or do it in public eyes, right? But politics hoti hai. The good thing is that debate was good. मैंने काफी ज्यादा, मैंने बताया ना मैं बीमार था, आई हैड बैक प्रॉब्लम, तो मैं लेटे लेटे बहुत सारी डिबेट सुनी. द डिबेट वाज गुड. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि वी शुड actually go for another review of the population policy so that we can get more out of that control and awareness. सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें विमेन रिजर्वेशन 33% किया गया था हाउसेस में, स्टेट असेंबलीज में, दैट इज ऑलरेडी बीइंग पास एंड नोटिफाइड बिफोर दिस पर्टिकुलर सेशन. व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग? दे सेड कि हम पहले डीलिमिटेशन करेंगे, डीलिमिटेशन के बाद फिर रिजर्वेशन को क्या करेंगे, विमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे. द पोजीशन वाज सेइंग कि विमेन रिजर्वेशन आप अभी इंप्लीमेंट कर दो, डीलिमिटेशन का बाद में देखेंगे. व्हाट इज डिलिमिटेशन, मैं उसको सीधे तौर पे बता देता हूँ. जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, द रिप्रेजेंटेटिव हैड मोर बर्डन अबाउट द पीपल. So delimitation is a process where a commission, right, or government made commission, fix the number of seat and fix the area of constituency, right? Yes, so let's say X state is there, X state में मान लो अभी 21 seats हैं, so they will fix that कि भैया total number of representation कितना होना चाहिए. So let's say उन्होंने बोला कि 30 होना चाहिए. तो अब now the state which was divided into 21 constituency has to redivide into 30 constituency. So every constituency उनका border, उनका territorial area, उनकी population distribution, सारी चीजें जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी. And to achieve that particular change, the uh, delimitation commission will work on it. So these are going to happen for two particular reasons. One is general election, जिसको हम लोक सभा कहते हैं. One is state legislative assembly election, जिसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं. It also include determining the seats to be reserved for scheduled caste, scheduled tribe and क्या कहना चाहिए, ट्राइब्स इन द हाउसेस. सो ये रिजर्वेशन के लिए भी वो करेंगे कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन और समथिंग लाइक दिस इज मोर, तो वहां पे रिजर्वेशन के लिए भी ये मार्क करेंगे. आर्टिकल 18 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ सीट्स द लोक सभा एंड स्टेट legislative assembly will have, as well as the division into territorial constituencies, shall be readjusted after the census. तो हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना था, बट वो पॉपुलेशन इम्बैलेंस के कारण नहीं हो पाया. Right. This process is performed by the Delimitation Commission that is put into the act by the Parliament. It will have a chief election commissioner, it will have a Supreme Court judge, right, and some other members. So that was supposed to happen. अब यहाँ पे थोड़ा सा clarity रखना कि it was not the bill that went down. It was not about the women reservation bill that has already been passed in 2023. तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम ये मत करना कि नहीं वो फेल हो गया या वो डाउन हो गया. Women Reservation Bill, known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam, has already passed in September 2023 in a special session called by the government. Right, when तुम्हें पता है सारे MPs ने except two सबने support किया था, favor किया था उसका. This was a kind of women reservation bill जो mainly delimitation पे based था कि पहले हम delimitation करके seats बढ़ा देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, women reservation दे देंगे. दो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये पॉइंट मेंशन था कि डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशन मिलेगा. उस टाइम पे भी आई एम नॉट श्योर कि हमने कभी बात की, बट वी हैड दिस डिस्कशन कि विदाउट डिलिमिटेशन इसका कोई मतलब नहीं है. And population is going to be conducted in 2026-27. So 27 अप्रैल में जाके उसका पॉपुलेशन के एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा. So उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन मिलेगा. Right? For now, it's being frozen. आपको ध्यान रखना है कि this delimitation was supposed to happen in 76, but वहां पे freeze किया गया. 2001 यहाँ पे freeze किया गया. अब 2026 में होना है. For now, it looks like it's freeze, but the statement that Amit Shah gave after this particular session, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इसको वापस लाएंगे. Right? तो ये चीज होने वाली है. Okay, so this was the most important topic for today. हमने बात की, काफी सारे अलग अलग इवेंट थे. आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम है तो बहुत लंबा नहीं बैठ सकता था, सो आई डिसाइडेड टू गो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज दिस. एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर टॉपिक. अगला सेशन हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक कवर कर सकें. So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay motivated and stay focused on your study. See ya, guys. Good day.